खबर आपको देंगे वाशिंगटन से, जहां पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि उस हुकूमत के साथ काम करेंगे जिसे पाकिस्तानी अवाम ने मुंतखब किया। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से कहा गया कि धांधली के दावों पर मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। उनकी जानिब से क्या कहा गया, आपको सुनवाते हैं। Your overall analysis on Pakistani elections. Imran Khan came out as the winner. What is your overall analysis on the election? Let me say that we congratulate the Pakistani people, first of all, for participating on the election on Thursday. That includes poll workers, civil society members, journalists, and election observers who have protected Pakistan's democratic and electoral institutions. We did express concerns publicly. We also expressed those concerns privately and joined the EU, the UK, and other countries in doing so. With some irregularities that we saw in the process, we've conveyed the need for the Pakistani government to respect the will of the election. We emphasize, you heard us you heard me from this podium certainly repeatedly, but also across the government, emphasize that we want to see the rule of law, respect for Constitution, free press, vibrant civil society. We condemn political and election-related violence and restrictions on internet and cell phone service. Those negatively impacted the electoral service. The claims of interference and fraud that we have seen raised, we want to ensure are fully investigated by Pakistan's legal system, and we will be continuing to monitor that in the days ahead. So you said that you are ready to work with the new Pakistani government. But if this new Pakistani government came in with the allegations of fraud and irregularities, what is your opinion? Well, I don't think there is a new Pakistani government yet. I believe there's still discussions going on about the formation of a government. But one of the things that we have said leading up to the election, and we'll continue to make clear, is that whoever the Pakistani people choose to represent them, we will work with that government. And as to the claims of fraud, we want to see those fully investigated. Yeah, go ahead. I know you said there isn't a Pakistani government yet, but certainly former Prime Minister Khan's faction, some of them independents came in ahead. Is there any concern about the legitimacy of whoever actually becomes the leader of Pakistan? I will say that let me just reiterate that we do think that the claims of fraud need to be fully investigated. That said, it was clearly a competitive election in which people were able to exercise their choice. Now, that said, there were irregularities. We want to see them investigated. But ultimately, we respect the democratic process, and we're ready to work with the government once it's formed. And just one more on Pakistan. The authorities have had a ban on assembly. Some of Imran Khan's supporters have called for protests on this. Is there any concern about freedom of assembly right now in Pakistan? Certainly, we want to see the freedom of assembly is respected anywhere in the world. What body they're proposing to conduct an independent investigation would be, I'm happy to look at that if there's a specific proposal. Right now, we think as a matter of first course, it's that the legal system play itself out in Pakistan. That's the appropriate first step to take, and we think that's the step that should be taken. If there are additional steps that ought to be entertained, we're happy to look at them at that time. इसी पर बात करते हैं वाशिंगटन से हमारे नुमाइंदे जहांज़ेब अली हमारे साथ मौजूद हैं। जहांज़ेब, बताइए इस मुताबिक। ये देखिए, तर्जुमान की महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने आज बड़ी तफसील में गुफ्तगू की पाकिस्तानी इंतखाबात के ऊपर और पाकिस्तानी कौम को इंतखाबात में हिस्सा लेने पर मुबारकबाद भी पेश की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन लड़ते सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी और इंतखाबी मुबसरीन ने पाकिस्तान के जमहूरी और इंतखाबी इदारों का तहफ़्फ़ुज़ किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हुक्काम को कहते हैं कि पाकिस्तान की इंतखाबी नताइज जो है और लोगों के जो विल है उसका एहतराम किया जाए। उन्होंने कहा कानून की हुक्मरानी, आइन का एहतराम, आज़ाद मीडिया, मुतहरिक सिविल सोसाइटी देखना चाहते हैं, जबकि धोखाधड़ी और धांधली के तमाम इल्जामात की तहकीकात भी होते हुए देखना चाहते हैं। मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम जिसको भी नुमाइंदगी के लिए मुंतखब करेंगे, अमरीका उसके साथ ही मिलकर काम करेगा और आने वाले दिनों में इंतखाबात की शफाफियत की निगरानी भी जारी रखेंगे। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि अमरीका सियासी और इंतखाबी तशद्दुद, इंटरनेट और सेल सर्विस पर पाबंदियों की मजम्मत करता है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि जो भी ये किया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका गया, मीडिया को दबाया गया और दूसरी चीज़ें हुई, उसने इंतखाबी अमल को मनफी तौर पर जो है वो मुतासिर किया है। उन्होंने कहा कि जोर देते हैं कि कानून की हुक्मरानी, आइन का एहतराम, आज़ादी सहाफ़त, मुतहरिक सिविल सोसाइटी का एहतराम किया जाए। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन से बरतानिया और अमरीका ने भी दीगर ममालिक के साथ मिलकर धांधली के मुताबिक खदशात का इजहार किया है और हम कहते हैं कि पाकिस्तान
ان تمام الزامات کی جو ہے مکمل تحقیقات کرے جو کہ انتخابات کو بہتر بنانے میں بہتر ثابت ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ قدم ہے جو اس وقت اٹھانا جانا چاہیے. آپ کا شکریہ جہاں زیب.